एको पॉइंट पे जाकर आप जोर से चिल्लाओ म्यूचुअल फंड, सामने से जवाब आएगी सही है। ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, और जो बता सकता है आपसे झूठ बोल रहा है। थोड़ा तो धड़कन बढ़ जाती है। दैट इज वाई यू विल रिमेन मिडिल क्लास। जन्म पे शुरू करने से 60 की उम्र तक 215 करोड़ जमा होते हैं। यस, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फॉर मी द ओनली रेड फ्लैग इज थीमेटिक फंड सुने हैं, सेक्टोरल सुने हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट कैटेगरीज, बट factor based funds is something that for me is a little new. Do you think that this entire bucket is here to stay, and what does it really mean? कोई भी चीज आप नंबर बेस्ड करोगे, दैट नंबर बिकम्स अ फैक्टर। निफ्टी 50 या BSE सेंसेक्स आर द सिंपलेस्ट इंडेक्स और इंडाइसेस जो लोगों को जिसके बारे में जानते हैं। ये इंडाइसेस आर बेस्ड ऑन market capitalization spread across different industries. These are all factors that are taken, brought together, and to decide कि भाई ये नंबर के आधार पर, सिर्फ नंबर के आधार पर, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता नहीं। इसमें माई व्यू योर व्यू डज नॉट मैटर। सिर्फ नंबर के आधार पर जब मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूं, इट इज कॉल्ड फैक्टर बेस्ड। मान लीजिए कि 6 फैक्टर, 3 फैक्टर एक तरफा चलते हैं, 3 फैक्टर दूसरी तरफा चलते हैं। सम ऑफ देम आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, सम ऑफ देम आर इनवर्सली कोरिलेटेड। अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स टारगेट, बट एट द एंड ऑफ द डे दीज आर नंबर्स, एंड द मोर फैक्टर्स आई ब्रिंग इन, ज्यादा होशियार लगता हूं मैं। फिर मुझे आप स्मार्ट बीटा बुला लीजिए, फर्क इतना ही है। But that is as simple as factor based or smart beta investing goes. तो can you give some examples कि किस किस टाइप के फैक्टर्स होते हैं? Of course. So एक मैंने बात की is market capitalization as a factor for investing. दूसरा हम बोल सकते हैं कि let me try and choose companies, okay, परफॉर्मेंस के आधार पर। कंपनी की अर्निंग होती है, शेयर प्राइस होती है, अर्निंग्स पर शेयर you arrive at. Yeah. So you can say, I want companies that have an EPS greater than a particular percentage. So company performance can become a factor. Valuation can become a factor. अरे ये कंपनी प्राइस अर्निंग रेशियो के आधार पर महंगी है या सस्ती है। Now सस्ती does not mean खराब है, okay? Like price to book, price earning ratio. The stock price itself can become a factor. Stock के भाव में बदलाव कितना आया, जिसको हम सिंपल मोमेंटम कहते हैं। आप एक ऐसा फैक्टर बना सकते हो जहां पर जितना ज्यादा उतार चढ़ाव, आप वो हिसाब से पोर्टफोलियो बांध सकते हो, या ऑन द अदर साइड यू कैन से जितना कम उतार चढ़ाव, lower the volatility versus momentum, can be two completely different factors on the basis of which you like to invest. Then there can be styles. Quality is a style of investing. Value is a style of investing. Growth is a style of investing. So there are as many जितने नंबर पब्लिश होते हैं ना, आप उतने फैक्टर क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट वे टू समराइज कि जितने मेट्रिक्स आई थिंक हम डिवाइस कर सकते हैं वो सब फैक्टर्स बन जाएंगे। बिल्कुल। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द नंबर्स, बट आई रेड दिस समवेयर दैट इन द लास्ट 7 months ऑफ दिस ईयर देयर आर क्लोज टू 106 NFOs जो अभी तक ऑलरेडी अनाउंस हो गए हैं, आउट ऑफ विच 63 आर पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सो I just feel like people are really shifting towards passive investment, opportunities now. So, do you think there is a reason कि लोग उसके लिए opt कर रहे हैं? And like, what does that offer जो active investment में नहीं मिल पा रहा है लोगों को? हमारे 2 NFO चल रहे हैं, एक क्वालिटी के आधार पे और एक दूसरा है सिर्फ प्राइवेट बैंक्स को दिखता है। ये प्राइवेट बैंक के बारे में हमारे पास आइडिया कहाँ से आया, ठीक है? हम नंबर्स देख रहे थे। As on 31st of August, the Nifty 50 gave 31%, but the Nifty Bank Index has given less than half of that 31. So it's underperforming. Underperforming. अब बैंक के अंदर प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है। हाँ जी। एक साल
पीएसयू बैंक का रिटर्न 56% रहा है, बट प्राइवेट बैंक का रिटर्न सिंगल डिजिट में रहा है, इट हैज बीन बिलो 10%. एज अ प्रोडक्ट क्रिएटर, अ मैन्युफैक्चरर, मैं ये चीजों पे ध्यान देता हूं. इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी विल स्टिल नीड banks. There is a phase in which private banks have not done well, public sector banks have done very well, rightfully so. But please remember that all these private banks have been multi baggers for multi decades in terms of wealth creation for people. And our point was there is no joy, कोई मजा नहीं है कि कोई चीज आपको 60-70% रिटर्न दे चुका है, उसके बाद मैं वो प्रोडक्ट आपके सामने पेश करूं. ओके, क्योंकि मौका तो आपके हाथों से निकल चुका था. बट दिस इज वेयर वी कीप लुकिंग एज एन इंडस्ट्री, नॉट जस्ट एट यूटीआई, कि आने वाला मौका कहाँ है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर सीइंग at UTI and many other places this passive funds, index funds. क्योंकि मेरे पास मेरे पोर्टफोलियोज में ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक नहीं है. many of my funds have large holdings in private banks, ऐसा नहीं है. बट ऐसा मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें सिर्फ प्राइवेट बैंक्स है. एंड देयर इज अ Nifty Private Bank Index. Why don't we just launch a index fund that will replicate the Nifty Private Bank Index? From what I've understood, it's just that because private bank indices have been underperforming for a bit, there's a hope कि it'll take up now, and that's why you want to capitalize on that opportunity. अब कहाँ से कब होगा is the point of maximum pessimism. या ऐसा वक्त निकल चुका है कि यहाँ से और ये लंबा मंदी का माहौल इन बैंक्स में चलेगा नहीं. ना आप बता सकते हो, ना मैं बता सकता हूं, और जो बता सकता है आपसे झूठ बोल रहा है. कि जब मैं इकोनॉमी और मार्केट्स का हाल देखता हूं ना, मुझे दिवाली और मिठाई की याद आती है. दिवाली इज लाइक इंडियन इकोनॉमी. ओके, हर साल दिवाली आएगी, इंडियन इकोनॉमी विल ऑल्सो डू वेल. मार्केट्स इज लाइक मिठाई. अगर आपके घर पे एडवांस में बहुत सारी मिठाई आ गई है, अगले साल दिवाली जरूर आएगी, बट आपको मिठाई नहीं मिली, तो आप रोना मत, क्योंकि वो वक्त पे आपको जरूर याद रखना चाहिए कि अरे भाई वो साल जब मुझे 10-10 किलो आई थी या 60-70-80% रिटर्न मिले थे, वो एक्चुअली आगे आने वाली दिवाली के थे. अब दिवाली आई और मिठाई नहीं बटी, वो वक्त रोना मत. आई थिंक वही बात है ना कि पूरा आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, एवरीथिंग वाज ग्रेट, बट अब सेटिस्फैक्शन है कि अब समझ आ गया. बिल्कुल. कहानी तो वही होती है जो क्लाइमैक्स में रिवील होती है ना. सो अभी आप सोचिए कि वेदर इट इज क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग. ओके, पिछले 4 साल में इट हैज बीन अ बिग अंडर परफॉर्मर, बट उसके प्रायर 3 साल इट हैज बीन अ ग्रेट परफॉर्मर. ओके, अब जो क्वालिटी में निवेशक बैठा हुआ है, ओके, उसको कोई मिठाई नहीं मिली है. जो वैल्यू स्टाइल में निवेशक बैठा है, पिछले 3.5-4 साल में उसको भर भर के मिठाई मिली है. अब जब ये रोटेशन होता है, रिवर्सल होता है, रिवर्जन टू मीन होता है, ओके, मिठाई कहीं और शायद बटेगी. आपको ये जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए कि भाई ये पेड़े कहाँ पर बट रहे हैं, बटने वाले हैं, बट चुके हैं, उसका कोई फायदा नहीं है आपको. तो वही बात है ना, पहले से अपॉर्चुनिटी का आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मिठाई बटेगी तो मैं वहीं जाके बैठ जाऊँ. बिल्कुल. तो सर अभी जैसे हम लोग बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे थे, राइट, देयर इज दिस ऑब्जर्वेशन कि फॉर एग्जांपल इवन दिस प्राइवेट बैंक इंडेक्स जो निफ्टी का है, या इनके अंदर वी हैव सम really well reputed banks, जैसे कि HDFC हो गया, Axis हो गया, Kotak, ICICI, Indusland. These are legacy banks, right? They've been here for a long time and they'll probably be here for a very long time. And they have great fundamentals as well. They have a very strong NIM, good asset quality, very pristine. Everything is great, but kahin na kahin inki performance hasn't been that impressive. So why do you think that is? Like, again, does this also mean कि अब इनका टाइम आने वाला है? हर संस्था अलग होती है. ईच वन गोज थ्रू
their own challenges and pinpoints. आप HDFC का देखोगे, बाप बेटे के अंदर मर्ज हो गया है, HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अंदर मर्ज हो गया है. जी जी. Now, for things to settle down, for the story to get reorganized, okay, because HDFC Limited and the bank were completely different businesses which have now got merged. The market will take its time, for this new institution now to go back on the path of growth. Okay. In the meantime, the market has not rewarded the HDFC stock, likewise the Kotak Bank stock, Axis Bank stock, okay. But do remember, same HDFC Bank is a 25% CAGR stock for over 20 years, other than the last 5 years. So आपको वो विश्वास होना चाहिए कि भाई ये मैनेजमेंट टीम है, ये बैलेंस शीट है, ये बिजनेस है, कंज्यूमर क्या क्रेडिट लेना बंद कर देगा. ये जो प्राइवेट बैंक इंडेक्स है ना, अपने खुद के वैल्यूएशन से, पास्ट वैल्यूएशन से 40% के डिस्काउंट पे आज की तारीख में ट्रेड हो रहा है. दैट डज नॉट मीन इट कैन नॉट ट्रेड लोअर. दैट डज नॉट मीन दैट, और मैं कोई अश्योरेंस या आश्वासन देना नहीं चाहता हूं कि यहां से सिर्फ ऊपर जा सकता है. दीज आर ऑल ग्रेट कंपनीज. कभी ना कभी देयर विल बी राइट ट्रिगर्स, whether it is internal to the company or external to the environment, the market will give them a better reward. अगर वो innate भरोसा है, then आपको वही वक्त पे खरीदना चाहिए जब दिवाली जरूर आएगी और मिठाई भी जरूर बटेगी. बिल्कुल. आई थिंक हमेशा चीज़ें ना उसी चीज़ पे आके टाई बैक हो जाती हैं कि अपॉर्चुनिटी को आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई कैसे करना है. बिल्कुल. राइट. सो दीज बैंक्स दे माइट नॉट हैव बीन परफॉर्मिंग ग्रेट, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर हियर टू स्टे. तो कभी ना कभी उनका भी टाइम आएगा. So आप देखिए, there are 4-5 पैरामीटर्स जिसके ऊपर आप कोई भी बैंक को मेजर कर सकते हो. आपने खुद बताया, there is net interest margin, okay. So the private bank, ये जो इंडेक्स है, इसमें सिर्फ 10 बैंक्स हैं, okay. इंडिया में there are 21 private banks listed. In that 10 banks are selected in this Nifty private bank index. इनका net interest margin is 3.8%. For all banks put together, that is 3.2. Okay, so they are better off. Return on asset, मतलब bank's business is about lending, correct? So, but because I don't have as much money, I also take deposits. Those deposits are my liabilities. जो मैं lend करता हूँ is my asset. My return on asset for private banks is 1.9. For all banks put together, it is only 1.4. Okay. Return on equity from private banks traditionally has been much higher, but today is 16.1. Okay. Gross NPAs, net NPAs are at decadal lows, but the market is not giving them a valuation today. So you have to wait. The right triggers will happen, and there is no joy कि पहले 25% रिटर्न आ चुका, फिर आप आकर्षित हुए ऐसे आइडिया के ऊपर और फिर आप आए निवेश करने के लिए. अच्छा, तो आई थिंक वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट दीज डिफरेंट यूनिवर्सेस, बट ऑनेस्टली इफ you've been on the news or even if you haven't, there's one thing that's everywhere and that is AI. So like I said, some time ago I was doing this podcast where we were talking about AI and how even managers and fund managers are not substituting but using it to improve their processes. So what do you think the impact of using AI is going to be when it comes to market and maybe on regulation, creation of these funds? I think we should give AI the due credit, but we should not give it more than the due credit. In AI, please remember the I factor is intelligence. Intelligence always existed. It was just that it is very cumbersome to take hours and hours and hours of intelligence and humanly keep crunching it, okay, to bring it and make use of it. And this is where artificial came into being and said, can a machine do it? And can the machine learn from own behavior that the machine is seeing in the data? Okay. So will AI become an integral part of everything that we do? The answer is yes, 100%.
Right. It वो already has, I हम think. एब्सोल्युटली एंड अगेन फॉर अ ले मैन मैं आपको एक पैरेलल एग्जांपल देता हूँ. नाउ लेट्स से इन अ मंथ यू गो एंड बाय वेजिटेबल्स एवरी सेकंड और थर्ड डे. नाउ योर भाजी वाला आओ हैज अ ग्रेट मेमोरी एंड इज एबल टू टेल यू कि अरे भाभी 15 दिन से आपने भिंडी नहीं ली व्हेन यू रिपीट भिंडी इन योर हाउस एवरी वंस अ Yeah. वीक. नाउ इफ द भाजी वाला इज एबल टू पुट अ कंप्यूटर देयर which understands your ordering pattern, Yeah. you put that together and you have Amazon. That's all it is. You have big Yeah. basket. That's all it is. Okay. That you have put a machine there to uh, work on data and present it to you in an intelligent manner. It will be an integral part of everything that we do. Exactly. So technology, please remember that we've had many scares with technology like this. Past mein, the internet revolution is going to take away jobs, right? But that's not the case. Humans know how to go up the value chain and adapt in using this as a tool rather than being destroyed by it. Makes sense. We were talking about index funds, right? What they do is they sort of replicate or follow an underlying index. That's how these funds work, right? When it comes to accuracy, how do you track कि मेरा index कितनी accuracy से किसी भी benchmark को follow कर रहा है? How do you track that? Index is a number. Okay, it is not bearing cost of brokerage, custody fees, or any such thing, which gets put together as fund running expenses. So the difference between an index and an index fund can be execution of trades. It can also be, and definitely is, the fund running expenses of the fund. You can measure it in two ways कि भाई आपका ट्रैकिंग एरर जिसे बुलाते हैं इंडेक्स के अगेंस्ट अगर बिकॉज ये एक्सपेंस है एक्सपेंस तो हमेशा रहेगा सो इंडेक्स फंड विल गिव यू अ रिटर्न लोअर देन द इंडेक्स बाय द एक्सपेंसेस करेक्ट. True. सो टू वेज यू कैन मेजर इट कि एक है ट्रैकिंग एरर सो इंडेक्स से कितना फर्क है. दूसरा है ट्रैकिंग डिफरेंस कि भाई दूसरे इंडेक्स फंड से हाउ एम आई वर्स ऑफ ओके और बेटर ऑफ. बोथ देज ट्रैकिंग एरर एंड ट्रैकिंग डिफरेंस के आधार पे यू कैन नो दिस. Understood. Okay. Quality value के बारे में at one point of a conversation हम compare कर रहे थे, right? तो we saw that in terms of standard deviation, quality has almost always underperformed and has performed a little lesser as compared to value. तो first of all, I'd like to understand कि standard deviation का implication क्या है, and secondly, why has this trend been the case over the last few years? Yeah. So first address standard deviation. What is standard deviation? कुछ नहीं तो मान लीजिए कि आपका शेयर प्राइस ओके 100 से 300 गया और मेरा शेयर प्राइस भी 100 से 300 गया. ठीक है. सो द रिटर्न फॉर बोथ इन्वेस्टर्स इज द सेम 200% गेन. करेक्ट. बट लेट्स अंडरस्टैंड आपका शेयर वेंट फ्रॉम 100 to 300, went to 1000, then dropped to 50, then went back to 500 and landed up at 200 or 300. So the price variability and the risk, the आपके 700 या धड़कन हाँ जी. कितनी बार उछालता गया आपका स्टॉक प्राइस ओके versus my company went from 100 to 300 के जर्नी में it was only up and down normally by about 10-15%. Yours went up by 100+%. Okay, is a risk that you are taking to achieve the same return. Okay, standard deviation measures that risk. So if I can get the same return with lower deviation, it is better. So that answers your first question. Okay. In the markets, there are always rotation that happens. पिछले 3.5 साल में value style has outperformed quality style
by 105%. बट उसके प्रायर 3 साल 2018, 19, 20 क्वालिटी आउट परफॉर्म वैल्यू बाय ऑलमोस्ट 74%. सो एक बार ये 74% से ज्यादा हुआ, दूसरी बार ये 103% से ज्यादा हुआ. नाउ एक ही चीज मैं जानता हूं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉमन मैन्स लॉजिक दैट यू हैव टू अप्लाई इन इन्वेस्टिंग, कि जिंदगी भर सिर्फ वैल्यू चलेगा और क्वालिटी नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा. हो नहीं सकता. करेक्ट. कभी ना कभी तो ये बदलाव आएगा कि क्वालिटी बाउंस बैक करेगा. अच्छा, दुनिया भर का ये फिनोमिनन है? द आंसर इज यस. 2023 में ग्लोबली एंड इन यूएस मार्केट्स क्वालिटी डिड फार बेटर देन वैल्यू, बट इन इंडिया वैल्यू कंटिन्यूड टू डू वेल. नो प्रॉब्लम. कभी ना कभी तो ये कहानी बदलेगी. लास्ट पॉइंट ऑन दैट सब्जेक्ट. पिछले 3 महीने, ये मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, एक्चुअली 4 महीने, चारों महीने क्वालिटी हैज आउट परफॉर्म्ड वैल्यू. 3.5 साल वैल्यू आउट परफॉर्म क्वालिटी. बट द अर्ली साइंस आर दिस परमानेंट साइंस, मैं नहीं जानता हूं, बट ये सिर्फ मैं जानता हूं एज अ सिंपल लेमैन कि जिंदगी भर एक लहर तो नहीं चल सकती है. रिवर्सल ऑफ ट्रेंड्स हैज टू हैपन. तो सर, बहुत we talked a lot about both of these industries, right? Banking and this Nifty 200 universe. And we know that UTI is coming up with 2 mutual funds that are based on these themes. Could you tell us a little bit about this Nifty 200 Quality 30 Index Fund? And मेरा question personally ये है कि सिर्फ 30 क्यों? Sure. 200 is a really big universe. तो सिर्फ उन 30 कंपनीज में ऐसा क्या है that's what you're going with? So पहले तो ये इंडेक्स है. सो ये 30 कंपनीज क्यों, वो एक्चुअली इंडेक्स बनाने वाले ने 30 कंपनीज का सिलेक्शन किया था. ओके. कि 50 में बी टू एक्सेसिव. ओके. 75 में डाइल्यूट द पोर्टफोलियो कंप्लीटली, and therefore they arrived at a number, and there is a science behind these things. It's never just a number. You keep looking at, if I did 30, 35, 40, 45, which gave the optimum balance between diversification and return versus saying bigger diversification but dilution of return. And that's the way you arrive, and the index maker creates that. Okay. हमने पहले बात की थी कि क्वालिटी इज व्हाट इज नथिंग बट ए स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग which looks at health of balance sheet or borrowing, looks at return on equity, the higher the better, and lastly variability in earnings per share. So होता क्या है कि the index maker looks at the Nifty 200 universe. For all these 200 stocks, brings these measures out. Okay. Gives a quality score, okay, to each company. Okay. And then basis free float market capitalization, the top 30 companies are selected basis quality score, and how much to buy of each company is decided by the free float market capitalization. In any case, index में no stock at the time of rebalancing will be more than 5%. So even if I have a very high quality score and I have got the largest free float market capitalization, ये फंड में 5% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होगा. जब ये बिल्कुल 30 stocks है, but it's not more than 5% in any one stock. So it is a well diversified portfolio in that sense. Understood. Similarly, I'd love for you to talk about the Nifty Private Bank Index Fund. And again, यहाँ पे मेरा एक question है that मेरा concern I think actually कि do you not think that this is really narrow in terms of scope? Like, does it offer enough diversification? So आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है. So पहले तो आप about the index, you must know that there are 21 private sector banks in India. Okay. Yeah. So the universe is not कि 300 बैंक्स है. प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, PSU नहीं. सो है ही 21.
ओके, सिंपल. अब 21 में से applying various parameters, more so the largest one being free float market capitalization again. The top 10 banks are selected and weightage is assigned, and weightage as per the recent change guidelines will be 25%, 25% maximum. अगर आज आप वो इंडेक्स देखते हो तो those stock are at 25% each, which is HDFC Bank and ICICI Bank. Okay. And you have got three stocks at 11% each, which is approximate numbers, which is Kotak Bank, IndusInd, and Axis Bank. So about 83% of your portfolio is in these five banks. And then you have IDFC, you've got First City Union, you've got Federal Bank, you've got five more in all put together. Okay. So it's a 10 bank portfolio. आपका जो दूसरा सवाल था, isn't this too narrow? Yeah, I fully agree with you. Okay, that it's a very narrow theme. But you have to look at your investments also in that way. This cannot be a core part of your portfolio. Will this be a core allocation to your portfolio or the way you build your portfolio for the first time? The answer is no. Is the private bank index the first product you should buy? My answer is an emphatic no. No. It cannot be the first fund जो आप जिंदगी में खरीद रहे हो. Okay? Makes sense. But for an investor who has bought large cap, mid cap, small cap, okay, एक दो सेक्टर या थीमेटिक फंड्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज है, फार्मा है, IT है, you bought those kind of things and are saying okay, now I want to add a little to a part of the market जहां पर कोई रिटर्न आया ही नहीं है. It is meant for an investor like that. One red flag for you when it comes to picking out investments? For me, the only red flag is return. Okay. And मैं बार बार मैं वही बोलूँगा कि पहले तो आपको प्रोडक्ट का बेसिक जानकारी तो डेफिनेटली होनी चाहिए. ओके, बट बहुत सारे दोस्त यार कोलीग्स, फ्रेंड्स हमेशा मुझे आके पूछेंगे तेरा ये फंड के बारे में या ये थीम के बारे में व्यू क्या है. मैं थोड़ी ना फंड मैनेजर हूँ, मुझे क्या व्यू होगा. बट मैं एक ही चीज़ देखता हूँ कि भाई अगर इफ इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एट 6-7%, expectation of market is 12 to 13 to 14% realistically. If something has given you 75-80% in 2 years as return, and then you are asking me this question कि आपका view क्या है, it's a red flag. Yeah. Everything is good if it is consumed in the right proportion for what you can digest. Okay, everything is good. Okay, so I think we've covered most questions that I honestly had. Do you have anything else that you would want to talk about, before we sign off from the session? So, just a few things I'll say. One is investing is a very simple subject. Don't complicate it with too many data points. US में क्या होगा, इलेक्शन में कौन जीतेगा, भाई तारा बापा नु सू. Okay. आपके I was काबू waiting में for क्या that Gujarati, honestly. है. Second, learning. So I always tell investors कि भाई ask this question, मारा बापा नु सू, मेरे बाप का क्या. Okay. When you are trying to take a data point and make it a decision making factor. दूसरी बात कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है. Okay, is your family. Focus on that, no? So if you ask me why do I invest, it has no relevance of ego. मैंने इतना पैसा बनाया, मैंने उतना पैसा बनाया, क्या करूँगा मैं उसका. As long as I'm able to take care of myself and my family with a reasonably good lifestyle, I'm a satisfied middle class Parsi. I would ask people to try and approach investing with that नजरिया. अपनी दुनिया है, खुश रहो, निवेश करो और शुरुआत जरूर जल्दी करो.
I think it's funny because I've talked to so many fund managers at this point. What's really funny is that all of them, and these are people who've spent years in the industry, and उनका हमेशा एक advice होता है कि आप complicate कर रहे हो, इसको simple रखो. And we as people who are starting out and new investors, हम लोग उसको इतना बड़ा हवा बना देते हैं कि अरे बस इसमें भी करना है, उसमें भी करना है. So it's always the opposite, that you guys are always asking us to simplify things, and हम लोग टेंशन लेके बैठे रहते हैं. मैं एक लास्ट क्लोजिंग में आपको एग्जांपल देता हूँ. आप 10,000 की SIP करते हो. मान लीजिए आप 30 की उम्र के हो. ओके, आपने 10,000 रुपए की SIP हर महीने शुरू की और मार्केट ने आपको 12% का रिटर्न दिया. 60 की उम्र में ना आपके लगभग 5 करोड़ बनेंगे. ओके, 10,000 की SIP 30 की उम्र में शुरू की आपने. ओके, मार्केट ने 12% रिटर्न दिया, आप 5 करोड़ जमा कर दोगे. बट ये ध्यान रखिए कि आपके नाना नानी या दादा दादी ने आपके जन्म पे 10,000 की SIP शुरू की. ओके, और यही SIP आपके माता पिता ने कंटिन्यू की, और जब आप 30 के हुए आपने कंटिन्यू की 60 की उम्र तक, और मार्केट रिटर्न बदला नहीं. मार्केट रिटर्न वही 12% है. वो जो 30 की उम्र में शुरू करने से 5 करोड़ जमा हुए, जन्म पे शुरू करने से 60 की उम्र तक 215 करोड़ जमा होते हैं, वही 12% से. मतलब मुझे यस शगुन, दैट इज रियलिटी. दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग. So when people ask me, "Hey boss, what should I do?" I say, "Boss, start a 10,000 rupee SIP. Practically every fund in India has given you more than 12% return. आपको इंडेक्स करना है, आपको एक्टिव करना है, पैसिव करना है, फैक्टर, स्मार्ट बीटा. अरे भाई, 10,000 की SIP at 12% return done for 60 years accumulates to 215 crores. Now, if you are not on that journey from the day you were born, that is why you will remain middle class, not because you chose the best fund or best stock." 215 करोड़ में तो ऑनेस्टली भी वहीं पे ही फंसी हुई हूँ. So take me some time to recover. एक ही एडवाइस है, आपने शुरुआत की ना, रोकना मत. And if you want the second piece of advice, go back to the earlier example that I gave you on the need to start early and the power of compounding over longer periods of time. That would be the wrong thing to do. The only advice is, please, हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, continue. Thank you so much. So that was honestly a really incredible conversation. मैंने तो बहुत कुछ सीखा, and I'm certain that the audience is also going to learn something new. And just thank you so much for your time. Absolute pleasure, Shagun. आपने हमें ये मंच पर आमंत्रित किया. बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करते हुए. Really appreciate it, and happy investing to your listeners and to you. Thank you so much, sir. I'm really happy that this conversation happened. And I'm in hoping to see advance- you in the next one. And in advance, and I'll close with saying Happy Diwali in advance. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.